Ready? Oh my God, thank you so much. I thought it would never go. Next question is, what if I forget to wear them regularly? Aligners work only when they are worn properly. Around 20 to 22 hours a day is what is the prescription like. So discipline shortens your treatment, but irregular wear extends it. The next question was, how much do aligners actually cost? Cost depends on the complexity of the case. Simple cases cost less, complex cases cost more. There is no single price, to be fair. It can only be decided after you come in-house, get yourselves examined, and then we can see where is your costing actually going to be. The next is, will the results last permanently? Yes, if retainers are worn, and retainers are not at all optional. They protect the results that you have worked for. So aligner is not about trends. They are about comfort, confidence, and long-term dental health. If you are curious, you can get yourselves assessed properly. No pressure, just an information.
नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल गिरधर आज आपसे दांतों के गिरने से हड्डी का भुरना, इससे जुड़ी हुई विषय पर बात करूंगा। अगर हम देखें तो दांतों का जो फंक्शन है, दांतों का जो काम है, वो सिर्फ आपके खाना चबाने में नहीं बल्कि आपके दिखने में और आपकी जीवन स्तर को ऊंचा रखने में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जैसे हमारे दांत गिरते हैं तो इन सब का असर हमारे चबाने की क्षमता पर आता है, हमारे दिखने की क्षमता पर आता है, हम दिखते कैसे हैं, और जिस जिस तरह से जैसे हम दिखते हैं, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी इसका असर आता है। सो आज हम जानेंगे कि दांत के गिरने से हड्डी कैसे भरने लगती है। जब पेशेंट, किसी भी मरीज़ की दांत गिरते हैं तो ये तो सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसके लिए चबाने का समस्या होने वाली है, उसके चबाने की क्षमता कुछ हद तक कम हो जाएंगी। पर यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा कुछ लोगों को कि जैसे जैसे दांत आपके गिरते हैं उसके साथ साथ वहाँ की हड्डी भी भरने लग जाती है। हड्डी एक स्पॉन्ज की तरह है, अगर उसके अंदर कुछ प्लेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो वो कोलैप्स हो जाएगी, वो भुरनी शुरू हो जाएगी। पहले साल के अंदर 25% तक हड्डी भुर सकती है दांत निकलने के बाद, और 4 मिलीमीटर तक हड्डी की हाइट कम हो सकती है। सो इसीलिए ज़रूरी है हम जल्दी से जल्दी दांत, निकले हुए दांत की जगह पर नया दांत लगवाएं। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर दांत, मरीज़ के सभी दांत निकल जाते हैं। जब सभी दांत बाहर निकल जाते हैं तो दांत की जो हड्डी का वॉल्यूम है, विड्थ, बोन हाइट, बोन की विड्थ, हाइट और लेंथ, ये सब चीज़ें जो है वो सिकुड़ने लगती हैं। अल्टीमेटली हड्डी जो है वो आपकी और कम होती जाती है। तो जैसे जैसे ये इस तरह की हड्डी जो और भुरती जाती है, जब कई साल हो जाते हैं भुरने दांत गिरे को, तो हड्डी धीरे धीरे करके और श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, यानी सिकुड़नी शुरू हो जाती है, और उससे आपका डेंचर लूज़ हो सकता है, आपको पेन हो सकती है, इस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो अभी देखते हैं कि बोन लॉस से या हड्डी भुरने से बेसिकली तकलीफ़ क्या क्या होती है। एक तो आपको अगर हमारे मुंह में दांत नहीं रहेंगे, हड्डी भी भुर जाएगी, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके मुंह के लिए और चेहरे के लिए जो सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, आपकी चिन और ठोड़ी जो है वो बाहर की तरफ घूम जाएगी, जो चेहरे की हाइट है, लंबाई है, वो कम होने लगेगी, और आपका च्यूइंग कैपेबिलिटी, मतलब कि चबाने की क्षमता तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगी। तो अगर हम देखें कि बोन लॉस को रोका कैसे जाए, हड्डी के भुरने को हम किस तरह से रोक सकते हैं। जो हड्डी का बनना है उसको चाहिए किसी ना किसी तरह का स्टिमुलस, जैसे कि नेचुरल दांत होते हैं, जैसे हम चबाते हैं उससे कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन मिलता है जिससे हड्डी को वो भुरने नहीं देता। जैसे किसी पौधे की जड़ होती है ना, वो वहाँ की मिट्टी को भुरने नहीं देती, इसी तरह जो दांत है वो हड्डी को पकड़ के रखता है, भुरने नहीं देता। तो बोन लॉस को हमें अगर रोकना है, मतलब अगर उसके भुरने को हमें रोकना है, तो हमें वहाँ पे कोई फ़िक्स चीज़ लगानी पड़ेगी, और ये फ़िक्स चीज़ होती है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आपकी हड्डी को वहाँ से भुरने की जो भी संभावनाएं हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। और इम्प्लांट डालने के बाद बेसिकली हमारी जो हड्डी है वो भुरने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, वो एक तरह से अपनी जड़ जो है वो पकड़ बना लेती है और उसके भुरने की क्षमताओं को कम कर देती है। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगाया जाता है जिसे अबटमेंट कहा जाता है। उसके ऊपर हम मतलब कहने का है कि ये सब प्रोसीजर्स जो हैं वो किसी एक दांत के लिए, 2 दांत के लिए, या पूरे मुंह खाली हो, उन सब के लिए ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। जो ऊपर वाली अटैचमेंट है उसके ऊपर हम दांत बिठा सकते हैं या पूरा डेंचर बिठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन होती है इम्प्लांट करने की। इम्प्लांट करने में जो ऑप्शंस होती, पहली बात तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, ठीक है। तो बहुत ही सरल और आसान प्रोसीजर है, 40-45 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो जिस समय आप आते हैं, अगर ये मैं एक दांत की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल दांत होंगे तो मान लीजिए अगर 3 या 4 दांत हैं तो 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। कभी कभी वो सेम दांत निकालना है, उसको निकालने के समय थोड़ा समय घंटा
लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो दांत निकालना है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो दांत लगाने के लिए 2-3 तरह की ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है रिमूवेबल डेंचर। रिमूवेबल डेंचर माने जो आप जबाड़ा पहनते हैं वही उतारने चढ़ाने वाला, उसी को हम नीचे हड्डी के अंदर इम्प्लांट डाल के फिक्स कर देते हैं। इसके अंदर डेंचर के अंदर हम कुछ अटैचमेंट लगाते हैं, जैसे टिच बटन होता है उस तरह से कुछ अटैचमेंट लगाते हैं और ऊपर के हिस्से में भी डेंचर बना के उसको उसके साथ फिट कर देते हैं। आप इसे खुद भी रिमूव कर पाएंगे इलाज होने के बाद, पर ये हिलेगा नहीं, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा और ये आपके चबाने की क्षमता काफ़ी इम्प्रूव कर देगा एक नॉर्मल डेंचर के बनस्पत। दूसरा ऑप्शन फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज होता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड रेस्टोरेशन। फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज ये सबसे ज़्यादा क्षमता आपको देता है चबाने की, और आपका जिसकी स्थिरता, जो दांत की स्थिरता है वो भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होती है। दांत आपका बिल्कुल कहीं कोई भी दांत किसी तरह से भी नहीं हिलेगा इसमें। ये इस तरह के रेस्टोरेशन ज़्यादातर डेंटिस्ट खुद ही निकाल सकते हैं, इसे आप नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। और इनका जो आकार, प्रकार और यूज़ है, फंक्शन है, वो सब नेचुरल दांत के, बिल्कुल असली दांत से बिल्कुल नज़दीक होता है, इसीलिए ये दांत लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सब था डेंटल इम्प्लांट के बारे में। यदि आपके कुछ सवाल हों, कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, तो यहाँ लिखे ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए एंड हम लोग आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Hello everyone, we are going to start a new series which is the Aligner Education Series today. Let us get started. Episode 1. What aligners really are. Aligners are not just clear trays that you wear and forget. They are planned medical movement of your teeth. Every aligner applies a controlled specific force in the particular direction. That force is decided on the software even before your treatment starts. Without planning, aligners become guesswork. And we all know that guesswork is where most failures begin. So the choice is yours. Whether you want good aligners to move your teeth gently or bad planning which makes patients move from clinic to clinic. What aligners actually are. Not everyone who wants aligner is suitable for aligners. And that's not bad news. It's called responsible dentistry. Crowding gaps, bite issues, each behaves differently. Some cases need attachment and some need hybrid treatment. Some should not start aligners at all. Age does not decide your eligibility. Your bone health and your bite does. That's why diagnosis matter more than discounts. Why digital scans matter? Aligner treatment starts before the first aligner. It starts with a digital scan. Scan shows how tooth position, space, and bite in the 3D. X-rays show what eyes cannot, root and bone. So skipping scans saves money up front, but costs much later. Aligners don't forgive wrong data. They only allow what they are fed. That's it for this. Comfort versus control. Aligners are known for comfort, but comfort without control is a problem. Teeth need direction, not just pressure. That's where attachments come in. They are not mistakes, they are tools. Fewer attachments look nice. Correct attachments work better. We choose results over shortcuts. Why some aligners treatments fail? Most aligner failures are not patient failures. They are planning failures. Poor bite analysis lead to poor outcomes. Missed refinements worsen your alignment. Lack of follow-ups delay correction. So your aligners need monitoring, not just the who. That's the uncomfortable truth. Time, reality, and discipline in aligners. Aligners work only when worn correctly. 20 to 22 hours a day is not a suggestion, it's a requirement per se. Skipping wear slows down your movement. Delayed movement needs refinements. Refinement needs more time, and discipline shortens the treatment. Excuses extend it. Results and retainer in aligners. Straight teeth are not the end. Stability is.
Teeth always try to move back. Retainers are not optional. They protect your investment. Skipping retainers undoes months of effort. Retention is lifelong. Regret does not have to be. The right way to decide aligners. Aligners are not about trends. They are about suitability assessment. A consultation with the dentist answers more questions than your Instagram can. And your scans actually replace the assumptions. Planning replaces the promises. Good dentistry explains even before starting, not after the problems appear. That is the right way to approach aligners. Thank you. That is all for this aligner education series. If you have any questions, feel free to DM us. Thank you. Episode 1. What dental implants really are. Dental implants are not just artificial teeth. They are medical, ethically proven replacements for the missing roots. An implant sits right into the bone, not on the gums. It becomes part of your jaw over the time. That is why implants feel more closer, or I would say the closest to the natural teeth. Why do we need planning? Not every missing tooth needs implant, but every implant needs the right foundation. So it is high time to understand what is the actual need of where to put the implant, why to put the implant. That has to be done by a very experienced clinician. Episode 2. Who is a good candidate for dental implants? Age is not the only criteria to decide implants. Age does not matter actually, but your bone quality and the general health too. Diabetes, smoking and habits do matter, but up to an extent, and the clinician decides how much does they matter. So how long does the tooth has been missing is another factor that will decide the success. Some patients need bone support first because the bone is way too less, but some are ready immediately. Implants are not the rush decisions, but they are definitely the personalized decisions. Episode 3. Why scans are absolutely non-negotiable in implant. Implant planning starts normally a day before the surgery. Scan is something like an OPG scan, which is absolutely non-negotiable. It is the basis of starting the planning. CBCT scans, if needed, show the bone width, height and the nerve position in a very exact manner. Eyes cannot see these details and small x-rays miss the intricacies. X-rays just cannot suggest the small intricacies. Placing implants without the scan is blind work. Good planning avoids complication and protects your long-term success. Episode 4. Pain, fear and reality about implants. Most of the patients are too much worried about the pain that the implant surgery will cause because of the word surgery. But modern implant placement is controlled and precise. Local anesthesia keeps the procedure comfortable, and the keyhole surgeries has made it without any incision or the extended surgeries. Most patients say extraction was worse, but implant was more comfortable. Pain is normally a temporary thing. Function is a long-term thing. Fear does not decide your long-term experience. The new age technology does. Episode 5. Immediate versus delayed implants. Not all implants are placed the same day. Some are immediate, some need some healing time first, but immediate doesn't always mean that it is better. Delayed does not always mean that it is outdated. The decision about the bone, infection and the bite is the right way to decide. Shortcuts are sometimes risking the failure, but timing protects your results. Episode 6. Implant quality and longevity. All implants do not perform the same manner. Their material, design, surface, all these things matter. Cheap implants often cost more,
later because of the replacement and the other country cases that are involved. Bone integration decides the longevity. The technique is the actual thing that decides the stability. Maintenance decides your lifespan. Implants can last decades if done and cared for in the right manner. Episode 7. Implants versus bridges. Bridges replace teeth, implant replace tooth. Bridges depend on the neighboring teeth and implants stand independently. Bridges may weaken your healthy teeth. Implants protect them. The right choice depends on your mouth and definitely the right dentist that you have chosen. It is definitely not decided on the trends, what the trend is. Aftercare and responsibilities. Implants don't fail suddenly. They fail slowly if they are neglected. Oral hygiene is absolutely non-negotiable when it comes to implants. Regular follow-ups matter a lot. Smoking definitely affects your implant health, and so does your uncontrolled diabetes. Implant is a partnership between the dentist and the patient, and you just cannot ignore that partnership wherein both need to meet and do the follow-ups and do the hygiene assessment as well. Episode 9. The right way to decide on implants. Implant is not an emergency position. They are lifetime decisions. So, good dentists explain you all the risks, not just the benefits. Planning matters more than the promises. Questions are always welcome. That is how the implant should be planned. No pressure and all planning. That is all for the day. That ends up our implant education series as well.